Hey guys, today I have with me the Tata Punch EV. ये है top of the line variant, the M powered variant, which can be yours for 14.49 lakh rupees एक showroom. ये गाड़ी की claimed range है 421 kilometers, but in reality how many kilometers does it go on a single charge, वो देखेंगे आज के वीडियो में. Before that I'll show you one thing. तो यहाँ पे आ जाओ. ये है गाड़ी का चार्जिंग फ्लैप ना, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन द न्यू प्लेटफॉर्म, एक्टिव प्लेटफॉर्म. तो टाटा की पहली इलेक्ट्रिक कार जिसमें आगे चार्जिंग फ्लैप आपको मिल जाता है. दिस इज द पैनल एंड दिस कैन बी ओपन थ्रू बटन ऑन द सेंटर कंसोल. बट अगर गाड़ी की बैटरी डेड हो गई है, अंदर से ओपन नहीं हो रहा, देन देयर इज अनदर अरेंजमेंट. मैं आपको दिखा देता हूँ. इसको पहले बंद कर देते हैं. सो दिस इज अ स्ट्रिंग ओवर. इसको आप अगर खींचेंगे ऐसे तो भी ये खुल जाता है. सो दिस इज देयर एंड यहाँ पे आपको 14 लीटर की फ्रंक मिल जाती है. अगेन दिस इज द फर्स्ट टाटा ईवी टू गेट अ फ्रंक राइट हियर. मैक्सिमम कैपेसिटी 5 kgs. क्या रखोगे आप इसमें बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में. इंसुलेशन आपको मिल जाता है. प्लास्टिक का कवर थोड़ा लूज है यहाँ पे. We'll shut this. So now it is time to start the range test. Now this is of course the top of the line model, which is why it has a 35 kilowatt hour battery making 90 kW, 90 kilowatt of power and 190 Newton meters of torque. 0 to 100 comes up in 9.5 seconds claimed. This car has 3 driving modes: eco mode, city mode, sport mode. And for the range test, I'll drive the car in normal mode, which is the city mode. Eco mode में थोड़ा चलाएंगे just to see the difference in performance. Sport mode में भी थोड़ा चलाएंगे just to see how big the jump in performance is. Right now the battery is at 94% and the range over here is showing 330 kilometers. अभी AC ऑफ है गाड़ी का. अगर मैं AC ऑन कर दूँ तो रेंज हो जाती है 297 किलोमीटर्स. अगर मैं स्पॉट मोड में गाड़ी को इंसर्ट कर दूँ, रेंज हो जाती है 282 kilometers. And if I put the car in eco mode, the range comes up to 315 kilometers. City mode में आ जाते हैं. And because we are in Bangalore right now, it is of course a little hot. तो पूरे वीडियो में AC के साथ ही गाड़ी चलाऊंगा मैं. Music will be playing and I'll drive the car at normal day to day speed limits जो हम लोग चलाते हैं जनरली 50, 60, 70. वही हाईवे पे 80, 90 पे चलाएंगे गाड़ी को. तो देखते हैं कितना है. आई एम होपफुल द कार विल रियलिस्टिकली गिव मी 300 किलोमीटर्स ऑफ रेंज. तो चलो स्टार्ट करते हैं. So I've been driving the Punch EV in Bengaluru and I have completed 50 kilometers of driving and the range on the display is 239 kilometers. मैं गाड़ी को नॉर्मल मोड में चला रहा हूँ, सिटी मोड में बेसिकली. स्पोर्ट मोड अभी तक ट्राई नहीं किया मैंने. इको मोड भी अभी तक नहीं ट्राई किया है मैंने. सिर्फ नॉर्मल मोड में चलाई. वी हैड सम ट्रैफिक व्हाइल कमिंग आउट ऑफ बेंगलुरु, बट अभी यहाँ पे हाईवे पे इट इज प्रीटी एम्प्टी एंड आई एम मेंटेनिंग अ स्पीड ऑफ 80-90 किलोमीटर्स इन आवर. AC इज ऑन एट फुल ब्लास्ट बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड द AC इज कूलिंग द कैबिन रियली वेल. ऑडियो सिस्टम भी काफ़ी मज़ेदार है इसका. उसके बारे में वील टॉक अबाउट दैट इन अ बिट. अभी परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू द स्पेक्स ऑफ दिस कार इन द स्टार्टिंग of the video. Now the thing is that the drivability of the Punch EV is actually quite nice. City mode mein it doesn't have that sudden burst of acceleration. It accelerates, it delivers all that torque in a very linear fashion. In fact I have started to become a bigger fan of the Punch EV compared to the Punch Ice and the dynamics are just sorted on this car. Ride quality काफ़ी अच्छी है. We drove on some bad roads also and even the out-road visibility seems good so far. अंडर थाई सपोर्ट could be a little better for the front seat. उसके बारे में पता चलेगा at the end of the range test. But so far so good. Drivability is tuned really well. The steering has a good amount of heft to it. तो काफ़ी feel यहाँ पे मिल रही है steering में. Next update I'll give you at 100 kilometers. We'll talk about the different driving modes in that and we'll also talk a little more about the dynamics of the car, the body control and the handling. So I've completed 100 kilometers driving the Punch EV and the battery is around 53% and the range is showing as 155 kilometers. So ideally the car should do around 250 kilometers. Now all this while for the first 100 kilometers I was driving the car only in city drive mode with level 1 of regeneration. This car has 3 different levels. Level 1 पे चलाई and AC has been on throughout the range test. अभी एक काम करते हैं. Now I have shifted the car to eco mode and the regeneration to level 2.
तो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा इसमें. देखते हैं हाउ मच ऑफ अ डिफरेंस इट मेक्स ओवर द नेक्स्ट 100 kilometers. Of course, in eco mode, the power delivery feels a little more controlled, and in city mode, it used to feel a little more responsive. But I'm just trying to experiment over here, and after that, we'll of course drive the car in the city also. So let's see ideally what is the real world range that you can get in real world conditions. Now the Tata Nexon has a claimed range of a little over 450 kilometers, and ideally that car does 280 to 320 kilometers on a full charge under ideal city driving scenarios, city and highway driving scenarios with AC on. And I think that is a range drop of around 55-60% compared to the claimed range. So in this also I'm expecting the same. So ideally this car should do around 250 to 40 kilometers probably on a single charge. So as I was saying, I'm driving the car in level 2 regeneration now, and this feels a little more aggressive compared to level 1. And when you drive the car only in the city, when you drive an EV only in the city, the range obviously shoots up because वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा efficient हो जाता है energy consumption, because you use regeneration a lot more over there, you coast a lot more in the city, and the regeneration is also much higher over there. तो वहाँ पे range ज़्यादा fast deplete नहीं होती. For driving on the highway constantly at 100-120, range फट गिरेगी. So of course in those scenarios the range will be higher. That is why I'm maintaining 80 kilometers an hour over here on the highway. You can see the speedometer. Range अभी दिखा रहा है 157 kilometers. Battery is at 52% right now. तो देखते हैं कितना चलता है. '90-degree opening door, and I'm in the back seat of the Punch. We are done with 150 kilometers. Battery is 38%, and the range is showing as a little over 106 kilometers. हम लोग ने चलाई 150, तो मतलब 250 चल जाएगी. 300 शायद चले ना चले, पता नहीं. देखते हैं. लेवल 2 रीजनरेशन पे चला रहे इन द इको मोड नाउ, एंड क्रूजिंग एट 70-80 ऑन द हाईवे. रेड सीट स्पेस की बात कर लेते. यू कैन हैव अ लुक एट द नी रूम ऑन ऑफर. Just about adequate for a person like me who is 6 feet tall. 185 centimeters is my height. Head is almost touching the roof. Decent है, मतलब headroom similar to the Punch Ice. यहाँ पे आपको armrest मिलता है, but no cup holders over here. Unfortunately, no middle headrest. Tata Motors, why? Rear AC vents इसमें नहीं मिलते, but because the car is small and the AC is powerful, you don't really need rear AC vents over here. Apart from that, it is very straightforward. यहाँ पे आपको grab handle मिलता है. Front passengers, the driver and the co-driver, they do not get a grab handle over here, unfortunately. Upholstery की quality बहुत अच्छी है, very very premium. It actually feels like a segment above, 2 segments above actually. And ये सब touches जो है छोटे छोटे वो गाड़ी में काफ़ी अच्छे हैं. I like the music system on offer. 10.25 inch की जो screen है with the 360 view camera. Amazing clarity and much better than the screen on the Punch Ice. The cluster is nice. Steering wheel is a scratch magnet though. उसकी alignment भी ठीक से हुई नहीं है. So I think QC is where things could be better. Quality check better होनी चाहिए. Fit and finish थोड़ी better हो सकती थी. But overall I still like the interior of the Punch EV more than the Nexon EV. तो ये हो गई basic बात. Drive continue करते हैं. Next update at 200 kilometers. Completed 200 kilometers with the Punch EV, and battery is at 24%. Range is showing 71 kilometers. मतलब 250 तो आराम से हो जाएगा. 260 270 भी हो सकता है. अभी हम लोग सिटी में वापस चलाएंगे गाड़ी. हैव टू गो बैक टू द होटल. तो देखते हैं होटल पहुंचेंगे तब कितनी बैटरी बचती है, कितनी रेंज बचती है. एंड नाउ टाइम टू अगेन ड्राइव द कार बैक इन इको मोड. अभी मैं सोचा लेवल 3 रीजनरेशन ट्राई कर लूँ सिटी ट्रैफिक में. लेट्स सी हाउ इफेक्टिव इट इज. ओवरऑल आई लाइक द डायनामिक्स ऑफ द कार. वेरी वेरी मैच्योर ड्राइविंग फील इट हैज. रोड, गंदे रोड को भी अच्छे से टैकल कर लेती है गाड़ी. हाई स्पीड्स पे स्टेबल फील होती है, एंड द स्टीयरिंग फील एंड फीडबैक इज एक्चुअली क्वाइट डिसेंट. आई लाइक द हाई स्पीड मैनर्स ऑफ द पंच, एंड इट हैज केप्ट मी रियली कंफर्टेबल. 200 किलोमीटर कैसे हो गए पता ही नहीं चला. एंड आई थिंक द कार इज अ वेरी वेरी सॉर्टेड पैकेज. Few bits could be better, the quality at certain places could be better, but again it is still better than the Nexon EV, and I really appreciate that fact. तो अभी एक काम करते हैं, फाइनल लेग शुरू करते हैं ड्राइव का, and I'll give you the last update when we reach our hotel near the Bengaluru International Airport.
So I'm back to my hotel with the Tata Punch EV. I drove this car for 221 kilometers and अभी भी गाड़ी में 39 kilometers की range बची है and 16% battery SOC is remaining, which I think is quite good. तो realistically ये गाड़ी एक full charge पे 270-280 kilometers आराम से कर लेती है and if you drive the car more efficiently, you use the car more in the city, less on the highway, आप regeneration modes का smartly इस्तेमाल करेंगे, then this car can actually do 300 kilometers on a full charge, which I think is nicely doable. And गाड़ी के सेगमेंट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से वो एक अच्छा खासा रियलिस्टिक रेंज है. आई नो द क्लेम्ड रेंज इज 412 किलोमीटर्स, वो हमेशा ज़्यादा ही होता है कोई भी गाड़ी में. इनफैक्ट इवन फॉर आइस कार्स वी हैव सीन एयर है, माइलेज इज मच हायर एंड द रियल वर्ल्ड माइलेज इज अ लिटिल लोअर देन दैट. तो मेरे हिसाब से गाड़ी की रेंज अच्छी है डे टू डे यूजेज के लिए एंड ओवरऑल द पैकेज इज ऑल्सो क्वाइट नाइस. गाड़ी स्टाइलिश लगती है, वेल बिल्ट फील होती है एंड इट हैज़ ऑलमोस्ट एवरी फीचर दैट यू कैन आस्क फॉर. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ स्पेस, कंफर्ट, परफॉर्मेंस, द कार इज सॉर्टेड. रियर सीट स्पेस is a little limited, but apart from that I did not find any major complaints with the Tata Punch EV. Of course compared to the petrol Punch it is a little on the expensive side, लेकिन वो extra price point में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है. So that was my first impression of the Punch EV. Later on we'll drive this car in Mumbai and do more detailed videos. आपको कैसी लगी ये इलेक्ट्रिक कार बताओ नीचे comment section में. I'll see you guys very soon in the next one.